Jai Janandra, Namaste, Vanakkam, welcome back. So today is actually Saturday, 6th of September. Before going ahead, yesterday, Teachers' Day, I received a lot of messages from you all. Thanks a lot. Uh, something which cannot be expressed on words, right? These wishes, and that means a lot to me. Yeah, especially the one I received Teachers' Day wishes from one of my very elder well wisher. I think so. He must be in his 70s. So he made my day. Thank you. Thanks a lot. Chalo. So let us move. Today is Saturday, but we'll be discussing about the video which we recorded on Thursday for Friday's levels, how it played, where it played, how was the trade clicked, everything about it, and then we will plan for Monday. Okay, are you all with me? Great. Today we will be discussing about gold and silver levels also. Not levels, I would say. The gold we are breaching all-time highs again and again. Sorry. Right? But what is the next level wherein we can look out for an investment? Currently, it is stretched out. So whether we should get into it or not, what will be the risk level, and everything we will be discussing about gold and silver also, right? But that would be coming at the end of the session. We will be going as we are going for the last almost 3 years. That is first Nifty, then Bank Nifty, Sensex or mid cap Nifty, or any other Fin Nifty or index something. Then we move on to equities which we are holding, which we are planning to invest also. Entry levels, what is the stop loss, what is the current situation, is it still hold or we have booked, everything about equities. And then we will move down to the commodities. Okay, so those who want to do listen to only commodities, you can scroll the video. After equity, the commodities will be coming. Fine. Chalo, let us begin off with Nifty. Nifty, we opened gap up, but we got, I said earlier, if we are opening gap up, we have to wait for the 15-minute candle to get closed, right? Then only we can look out for some setups and trades to come down. So that was a good trade. Nifty, we did not catch this rejection, but this rejection was very well caught by every one of us. That was a good point. And after that there was no trade, right? And we bounced from our exact blue line. See, can you now understand why not round figures? Because round figures is for retail investors, but we are traders who plan to walk in the footsteps of the institutional investors, right? So try to avoid the round figures. That's why you must be seeing we see entry above say 157. Odd figures are coming from, we always try to learn where the institutional investors are and from where they can start up the investing, or where they are going to exit, right? So we have to just walk in that footsteps. Fine. So this was a clear rejection, a good rejection. After that, this was straight bounce upside. Again we got rejected from here, right? That was the level. So this is how you have to, well, if you have caught hold of this candle, see, not this candle, I think so you would have you would have got entry at 24,672, right? So after this you have to trail. Once you reach this, you have to trail again for this level, and if it is getting rejected, yes, obviously you have to exit, right?
Afterwards, the market stayed sideways. After 1 o'clock, the market completely stayed sideways. So this is how the Nifty level worked. Same with the Bank Nifty. Opened gap up, but straight away with rejection. So below black line, red candle. Again, we got this. Yeah, over here, it did not adhere to the our bounce level. It's okay. Insanu. Again, so this is. We thought institutional investors will be bouncing from this area, but they came down till over here. There might be a small demand zone in some small time frames, so they came down till here, and from here it bounced. That's okay. Sensex, same rejection, and from blue line we got a bounce. So why levels? See, levels को let me tell you in little bit in Hindi. Levels क्यों चाहिए? Levels इसके लिए चाहिए कि आप एंट्री कहाँ करो, कौन से कैंडल पे आप एंट्री करो, और आपका टारगेट कहाँ तक खींच के लेके जा सकते हो. और एक बार आपका स्पॉट में टारगेट आ गया तो आप वॉट एवर यू आर होल्डिंग यू हैव टू एग्जिट, राइट. देयर आर चांसेस कि आपका प्रीमियम का टारगेट है ना अचीव नहीं होता है. से सपोज यू एंटर एट 10 रुपीज एंड यू सी अ टारगेट ऑफ 60 रुपीज, राइट. आप मतलब मैं यहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो और आप टारगेट सोच रहे हो 60 रुपीज, राइट. बट यू हैव अचीव्ड टारगेट ऑन द स्पॉट, बट ऑन द प्रीमियम साइड यू मस्ट हैव मतलब आप सिर्फ 40 रुपीज तक ही गए हो. तो व्हाट शुड यू डू? शुड यू वेट फॉर 60 रुपीज और शुड यू बुक? मतलब आपको बुक करना चाहिए या 60 रुपीज तक वेट करना चाहिए? ऑब्वियसली आपको बुक करना है. यू गॉट माई पॉइंट. क्योंकि हम बायर्स हैं. सेलर्स 0 तक रुक सकते हैं क्योंकि वापस बाउंस भी आता है ना, तो उसका कॉस्ट तक नहीं आता है. बट यहाँ पे 40 रुपीज वाला सिंपल है. यहाँ पे 40 रुपीज वाला क्या हुआ रहेगा, ये जो बाउंस हुआ स्ट्रेट अवे आपका वापस कॉस्ट पे आ गया. यू गेटिंग द पॉइंट्स विच आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड why you should adhere to the levels and why you should mark the levels on your charts also. Fine. Chalo, let us start marking up the levels for Monday. Let us start off with Nifty. Nifty now, yeah, this one will be my resistance, not this one. This one will be my resistance, right? And yeah, this is the blue dotted line. Blue dotted line generally EMS के साथ match कर देता है. This one is going to be my support, right? This one is going to be the support. You got it, right? This one is going to be the support, and the red lines will be, once the support breaks we can fall down to 24, this one 24,590 levels, right? So thoda elaborate kar lete. Now you can see the levels and you can note down the levels, right? 24,730, 720 है, 730 है, 720, right? 24,720 is this one. So 24,720 is going to be my area. If I open above this, if I get resistance from here, if I come here, I can take a, once a green candle is formed, I can take a long, or else if a red candle is formed, I can go for short till here, right? And थोड़ा और भी कुछ चीजें देखी है. Let us try to understand that also. हाँ, so levels note कर लो. 24,720. If I open above that, I have a resistance at 24,833, and very small resistance are going to come down because upside momentum हमेशा थोड़ा slow जाता है. 24,886, then 24,929, 930 you can say. And once I breach 24,930, 24,985 will be the levels,
and after that I can have a big momentum till 25,100. Till that time, no. So 25,000 levels, yes, we can see in the coming weeks if I open about 24,720. If not, if I go below 24,720, yes, downside is still there, right? 24, this level, 24,645 levels, and after that 24,595, then 24,525, that is 22, and then 24,402, that is, this is the last level, right? इसके नीचे तो हम currently तो नहीं देख रहे हैं, उसके नीचे जाएगा तो again big downside का ट्रेंड शुरू रहेगा, राइट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या देखा, थोड़ा अलग क्या देखा इसमें. कैन यू सी दिस ट्रेंड, राइट? ये दिस ट्रेंड वी गॉट अ ब्रेकआउट and we are sustaining above this, right? On Monday, if I open up over here also, try to be careful. If a green candle, see we have a support over here, but sometimes वो trend line पे आके bounce करके निकल जाता है, right? So try to figure out if the setup is also coming on in the premiums chart, then you can look out for that, right? Obviously SL should be within your limits, that you have to be very careful about that count. If SL is getting bigger, try to reduce the lot size. You got me? So this is what I have seen in the Nifty. So this is a very good sign कि कभी कभार यहाँ तक आके फिर यहाँ से bounce लेना शुरू करता है. That is a good sign if it bounces from the trend line. See, trend line break करके नीचे जाता है तो you have to, मतलब this outbreak is a fake outbreak, right? So this is on a 15-minute. That's why we are talking about intraday, only about Monday. I'm not talking about coming weeks or something, right? Coming weeks or in सब के लिए you have to look out for a daily chart. कि daily chart में क्या positions बनाई है, क्या नहीं, right? Supply, this is a supply, not a good supply zone, but still I'm considering it a supply zone because we got a big red candle, right? So we have talked about Nifty. Nifty, a good sign that we are looking at. Nifty Tuesday expiry भी है तो premium Monday को थोड़ा volatile भी मिलने का chances है. Volatile in the sense 5-10 points वो खाने की करते हैं. So that is what I'm saying. That is what volatile means. Fine. So let us move on to Bank Nifty. Bank Nifty. Oh, no trend line. Okay. Bank Nifty, I think so we still do not have any changes in the levels. The levels are still intact in the same way. मतलब this is the resistance पे ही है. A little bit momentum, मतलब this is getting shifted to 55,000 and this will be the 55 to 50 will be the resistance. Yeah, got this one. I'm not taking this top as the resistance, I'm taking this top as the resistance. Got it? So EMS की तरफ ये नजदीक मूव कर देता है, right? A slight momentums but not a big changes, but this is what we can look out for, right? 24, this one 24,960 के ऊपर अगर ओपन होते हैं तो 24,267 will be my resistance. If I break this, sorry, 20, it's not 24, it's 54, sorry. Oh, Nifty दिमाग में चल रहा है ना 24, sorry. So 54,267 is the resistance, and if I break that resistance, 54,500, then 54,700, right? Okay. Little bit deviation from the levels which we are talking. I got a message from one of the guy. He asked me, sir, आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो डू यू एडिट? बोला भाई आई डू नॉट एडिट द वीडियोस. वन शॉट में रिकॉर्डिंग्स होते हैं, वही रिकॉर्डिंग को अपलोड कर लेता हूँ. सो देयर माइट बी अ चांसेस दैट somebody must be coming inside my cabin or room, right, to call me कि what is happening, because
Obviously, I have a dog also, so he also comes and sits near me. So sometimes there might be a disturbance. वो disturbance, I do not take that as a disturbance. Take that as a focus point. कि भाई इतना आवाज होने के बाद भी आपको levels पे focus करना है. You get me? So my videos are never edited. One shot recording, one shot upload. Right? Until unless कोई मेजर आवाज आ जाता है तो मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और फिर वापस रिकॉर्डिंग करता हूँ. तो लिटिल बिट मेहनत में भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेता हूँ. ठीक है, चलो कम बैक टू द टॉपिक. सो आफ्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट द अपसाइड लेवल्स. इफ आई कम बिलो दिस, ऑब्वियसली आई हैव टू वेट फॉर माई सपोर्ट टू ब्रेक, देन ओनली आई कैन लुक आउट फॉर शॉर्ट. ब्लू लाइन के नीचे ओपन भी होते हैं तो भी आप शॉर्ट इमीडिएटली मत करना. आपको 53,710 के नीचे जब क्लोजिंग आएगा तभी आप एक शॉर्ट का लेवल देख सकते हो, अदरवाइज नॉट. डू यू गेट मी? फाइन. सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी. नाउ द सेंसेक्स लेवल्स. या सेंसेक्स सेम वे. देखो लास्ट टाइम आई थिंक सो लास्ट वीडियो ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट दिस कि ऑलमोस्ट सबके कैंडल इंडेक्स के ऑलमोस्ट सबके कैंडल फॉर्मेशन है ना सेम रहते हैं. लिटिल बिट ऑफ पॉइंट्स हियर एंड देयर, राइट. देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस सीधा मतलब आई वुड टेक दिस एज अ रेसिस्टेंस. दिस मूव्स ओवर हियर, दिस मूव्स ओवर हियर. और ये लाइंस इन सब है ना मार्क करके रखो, सो दैट क्या होएगा व्हेनेवर निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी कम्स एट योर लेवल, आपके कुछ भी पोजीशंस ओपन रहेंगे नहीं, यू नो व्हाट टू डू एट दैट टाइम. दैट्स द रीजन दिस लेवल्स आर required, and these levels help you a lot in taking up the decisions when the market is live. See, levels in the market live पे कभी नहीं निकालता है. क्यों? क्योंकि वो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्मेशंस चालू रहता है ना, तो आपका दिमाग भी है ना वो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन चलते रहता है. नाउ द मार्केट इज कूल. देयर इज नो कैंडल फॉर्मेशन, देयर इज नो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, बाई सेल ऑर्डर, कुछ नहीं है यहाँ पे. That makes your mind calm and focused. That's why always note down the levels when the market is calm. Calm in the sense of the market timing, right? So these are the levels, and if this level gets breached, then only downside in Sensex. Till that time, no. So 80,866. If I breach that, 81,150, and after that 81,450. Right, and if I open below this blue 80,570 levels, then it gets opened up for 80,323. If that breaks down, then 80,030 levels, and then 79,700 levels. Okay, 79,700 के नीचे गए तो वापस I do not know at that time, मतलब उस टाइम पे ट्रेड्स मंडे को प्रीव्यू करेंगे वो, right? So the same trend is seen over here. Can you see? Yeah. So a good sign. देखते हैं कैसा चलने वाला है. Got it? So now we have discussed about Nifty, Bank Nifty and Sensex. Let us move down the equities which we are holding right now, and some equities which we are looking out for fresh entries. Right? Dixon up, Auto Pharma a little bit down, NMDC almost we will be reaching our targets, only 1 rupee away. Reliance below cost, but it is a long term. TCS below cost, almost I think so 50 rupees below cost आ गया. Mothers and Sumi above cost. IJIL also moving good. ये डेली का कैंडल कर लेते हैं because we are holding it for a swing. Right, IJIL also good position. Once 50 EMA cross करेगा तो the 570 levels is, and we have to trade. Once 1:2 हो गया तो आपको ट्रेल करना है या तो बुक कर लेना. Asian Paints above cost, that is a good sign. Sagility at the cost. BDL थोड़ा नीचे है कॉस्ट से. प्रिकॉल
Yes, a good sign. Okay, let us check out precall. Have we achieved the target? Daily, see, levels को समझने के लिए ना you have to watch this videos on a daily basis religiously and consistently. चलो, this precall target is 511. ओके, प्रिकॉल आके गया क्या टारगेट? नहीं, 500 तक किया है, 508. ओके थोड़े से मिस किया. फाइन, इट इज ओके, ट्रेल कर लेंगे. अगर थोड़े से मिस किया है और इधर से बाउंस आया तो वी विल स्टार्ट ट्रेलिंग. सो प्रिकॉल इज ऑल्सो ऑलमोस्ट अचीविंग 1:2 का टारगेट. HAL वी आर बिलो कॉस्ट. HCL टेक वी आर बिलो कॉस्ट. सो HCL टेक में थोड़ा प्लानिंग करेंगे टू एड अप. क्या हो रहा है हम देखेंगे मंडे को. देन वी विल लुक आउट फॉर लिटिल बिट ऑफ एन एड. ओह, परसिस्टेंट ऑलमोस्ट 160, ऑलमोस्ट कॉस्ट पे आ गया वापस. फाइन, आईटी इंडस्ट्री में कुछ हिट आया है, बुक कर लेना चाहिए था ना. 517 इट इज आवर एंट्री. 5516, सी वी मिस्ड बाय 1 रुपया आई थिंक सो. यहाँ पे इसका टॉप क्या है? 5501, 2 रुपीज से मिस, 1.5 रुपी. राइट, हीरो मोटो को वी हैव ऑलरेडी बुक्ड. सो फाइन. Persistent, I am holding it, but many of the swing traders in our community 1:1 पे शायद बहुत सारे जन निकल गए. It is okay, I am still holding it out, so that's why this trade is and since I have not informed, and this trade is still active from my end. Fine. So still over here, clear. अभी 22nd मिनट पे है एग्जैक्टली. दैट इज अ गुड साइन दैट हम गोल्ड के बारे में जरा बात कर लेते हैं. गोल्ड सिल्वर विच आर ट्रेडिंग एट एन ऑल टाइम हाई. नॉट ओवर हियर, इसमें आधा ही है. ट्रेडिंग व्यू में गोल्ड चेक करेंगे. सी ओवर हियर इन दिस, if I go for a monthly candle, see I won't be having a continuation one, so I do not know where is it. इसके हिसाब से देखेंगे तो 81,000 से वो ऑल टाइम हाई पे ही आ रहा है. so that is not the correct view, no? So let us check out this. हाँ, गोल्ड ही चालू है, निफ्टी चालू है. गोल्ड फ्यूचर्स सेंसेक्स से यहाँ पे देखना. गोल्ड लेट अस कम फ्रॉम मंथली. क्वार्टरली से आते हैं. क्वार्टरली, इफ वी सी गोल्ड इन अ क्वार्टरली चार्ट, यू विल सी ऑलवेज अप्रिशिएशन, राइट, अंटिल अनलेस आप यहाँ पे बाई किए हैं दैट इज 53,000 पे, तो यू वुड हैव सीन 46,000 के आसपास. आप 44,000 वापस आपने लो देखा, राइट. 10,000, 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 माइनस देखना इज परसेंटेज वाइज थोड़ा ज़्यादा है, राइट. बट सिंस गोल्ड है आज नहीं तो दैट इज वे बैक इन 2021, राइट. बट 2021 ना, हाँ 2021, right. Currently we are here. So gold as an investment, yes, it is any time good time to get in, but now it is already stretched out. So a slight momentum, a slight negative momentum can impact your investment in a huge way, right. So currently gold is very much stretched out on a quarterly basis. थोड़ा नीचे जाते हैं. मंथली, यस, 5 EMA के ऊपर, मतलब 20 EMA से बाउंस लेके 5 EMA, 20 EMA से बाउंस लेके 5 EMA, ये हुआ है बहुत बार. तो यहाँ पे 20 EMA इज एट 87,000. भाई 20,000 रुपीज नीचे आ सकता है क्या गोल्ड? दैट इज 20%, नो. 1,07,000 अभी चल रहा है, सो ऑलमोस्ट 20% डाउन. आई डू नॉट नो, आई हैव नॉट सीन gold breaking more than 20%, but then also I will have a mark. यहाँ पे हुआ है क्या गोल्ड 20% का? this one,
इसका हाई क्या था 56, राइट, 56 का हाई था, एंड देन इसका लो 44, राइट। तो इतना नीचे आ सकता है, आई डू नॉट नो, बट गोल्ड है, वी हैव टू बी एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, मेरे को कहाँ एंट्री सही रहना चाहिए, दैट इज व्हाट वी लुक आउट फॉर, राइट। गुड एंट्री, अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड अ गुड रिटर्न्स, दैट इज व्हाट वी लुक आउट फॉर। सो गोल्ड में एंट्री अभी कहाँ हो सकती है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कहाँ हो सकती है। नहीं हो सकती है तो जबरदस्ती एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट्स। सी, इतना बड़ा रन आया है तो वाई टू चेज, आप मत चेज करो ना, यू हैव अदर थिंग्स ऑल्सो इन योर हैंड, मतलब आपके पास इक्विटीज हैं, अदर क्रूड ऑयल है, अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर, सो डू नॉट चेज द प्राइस, ठीक है। सो वी वर लुकिंग आउट फॉर मंथली, नाउ वी विल गो इन टू वीकली, राइट। ओके, वीकली भाई बहुत दूर है 5 EMA से भी, तो कभी भी आएगा नीचे तो 5 EMA तक तो आएगा, तो 1,03,000 के आसपास का 5 EMA है। सो नो, ओके, गुड डिमांड जोन ऑन अ वीकली नहीं है किधर भी, आई डू नॉट फाइंड एनी गुड डिमांड जोन ऑन अ वीकली। डेली, ओके, डेली पे सिंस वी डू नॉट नो कि इसका कहाँ से रिटर्न आ सकता है, मतलब वेर इट कैन गो एंड फ्रॉम वेर इट कैन रिटर्न। सो ऑन अ डेली लेट अस लुक आउट फॉर अप्लाइंग अ फिबोनाची, राइट। फिबोनाची अप्लाई करते हैं, राइट, इसमें से एक निकालना पड़ेगा, सिंस इट इज अ फ्री वर्जन आई हैव टू delete this and Fibonacci उसमें मतलब the other brokers which I am using उसमें easy थोड़ा मुझे मिलता है। let me try to apply, कैसे करना है that we will okay, can you see, मतलब जहाँ से फॉल आया एंड आफ्टर दैट जहाँ से पुल बैक मिला है, वी हैव मूव टूवर्ड्स दिस लेवल, राइट। After, if we form a green candle over here, then we can see moving towards 1,11,000, 12,000. Till that time, no. So, can you see this? Let me show you this. थोड़ा अच्छे से दिखेगा. Now you are able to see it, right? So this is one of the tool which you can use. कि फिबोनाची आई जनरली यूज कि जहाँ पे सप्लाई जोन नहीं रहता है कि तो ये कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से मुझे ट्रेल करना जरूरी है। इफ यू सी, ये स्टार्टिंग के जो भी हैं वहां पे पॉजेस है क्या, देखो यहाँ पे पॉज है, फिर यहाँ पे पॉज आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे वापस पॉज आया, फिर यहाँ से अप। तो यहाँ पे पॉज आने के बाद ना आपको ट्रेल कहाँ करना है भाई, इसके नीचे के कैंडल पे क्लोजिंग आया तो यू हैव टू एग्जिट इफ यू आर होल्डिंग इट। न्यू एंट्रीज है ही नहीं, न्यू एंट्रेंस इन द गोल्ड मुझे डेली पे तो दिख ही नहीं रहा है। लेट अस मूव ऑन टू द 4 आवर्स। 4 आवर्स के नीचे मैं गोल्ड देखता ही नहीं हूँ बिकॉज आई डू नॉट मतलब गोल्ड में आपको रुकना जरूरी है इन्वेस्ट करके। आपको इमीडिएटली वो बोलते हैं ना, ऑप्शंस जैसा नहीं है या कि आप अभी घुसे 10 मिनट में मिला, निकल गए 10 मिनट में, स्टॉप लॉस लिए निकल गए।
It is not that way, no, in gold. So gold, yes, that's why I was telling gold is already stretched out. देखो 4 hours में देखो stretched out है. So अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट 1,08,000 तक ही हम लोग देख रहे थे, 8,000 9,000 ज़्यादा तक, उसके ऊपर तो नहीं, बट 1,12,000 से भी रिटर्न आ सकता है. वी डू नॉट नो अबाउट इट. गोल्ड में गुड एंट्री, आई डू नॉट हैव एनी गुड एंट्रीज, सो इट इज़ बेटर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो ट्रेड करे, जिन्होंने नहीं किया है वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, so a good formation to come down, then make an entry in as an investment. But as per price action, this top, can you see this top, the 1,02,200 के जो levels है, that is going to be a support for the gold. Great, gold समझ में आया. Now let us move on to the silver. सिल्वर ये निकाल देता हूँ, वो हर जगह पे आते जाएगा. फाइन. सिल्वर सेम वे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वार्टरली. क्वार्टरली सिल्वर 2021 में मतलब वो एक साल तक वो उसी रेंज में था. ब्रेकआउट आएगा 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 करके वो एक साल तक वो ब्रेकआउट के लिए रुके थे 70,000 एंड अप्स लेवल के लिए. बाद में 2023 जैन में शायद ब्रेकआउट आया, हाँ, बाद में रिट्रेसमेंट आया. एग्जैक्ट ब्रेकआउट हम देखने जाए तो अप्रैल 2024 में आया. दैट वाज अ गुड. 75,000 से ब्रेकआउट होना शुरू हुआ. 55 से ब्रेकआउट, 55-60 लेवल से ब्रेकआउट की कोशिश थी यहाँ पे, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट 2020, 6 years बैक, नॉट नाउ. सो 75 के बाद ब्रेकआउट आया, अगेन रिट्रेसमेंट हुआ, बट उसके नीचे नहीं गया. देखो सपोर्ट लिया ना यहाँ पे, राइट. गोल्ड में भी वैसे ही 1,02,200 पे दिख रहा है. ठीक है, समझ में आया. सो सिल्वर ऑल टाइम हाई इन 3 months, 1 month, 1 month भी ऑल टाइम हाई. रिट्रेसमेंट आएगा नहीं आएगा, डो नॉट नो इट. आएगा उसी में इन्वेस्ट करना, अभी घुसना मत कोई भी बस. दैट इज व्हाट आई वुड से एवरीवन. स्ट्रेच्ड आउट प्राइसिंग पे एंट्री करना सही नहीं है. ठीक है. वीकली अपसाइड, यहाँ पे वीक ऊपर है, बॉडी नीचे है. इवन मंथली का कैंडल तो अभी रनिंग कैंडल है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट. बट वीकली लास्ट वीक का तो क्लोज हो गया ना. So weekly again, so this is weekly में आपको सपोर्ट यहाँ पे है, राइट. वो सपोर्ट तो देगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट है. डेली लेट अस चेक इट आउट. See this is I am see this all my videos are just for मतलब it is to make you understand how what should be the mindset, that's all. सी ट्रेड यहाँ पे लो ऐसा नहीं है. माइंडसेट क्या होना चाहिए. इतना स्ट्रेच्ड आउट हो गया, एवरीवन वाज आस्किंग सर गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई, व्हाट इज योर व्यूज, टेक्निकल क्या दिख रहा है. ऑब्वियसली आई एम अ टेक्निकल पर्सन, तो टेक्निकल चेक करता हूँ. टेक्निकल से ज़्यादा आपको है ना रिस्क मैनेजमेंट भी तो ज़रूरी है ना. से सपोज यू इन्वेस्ट इन सिल्वर ऑन मतलब आइदर मी टेलिंग और एनीबडी यू आर फॉलोइंग, आई वुड से भाई आपका रिस्क में है क्या. 1,24,000 आपके रिस्क में है क्या. इफ इट कम्स डाउन से 1,15,000 है तो स्ट्रेट अवे आपको 10,000 का माइनस दिखेगा. 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पे अगर 10,000 का माइनस मतलब कितना हुआ. इफ दैट इज इन योर पॉकेट साइज यू कैन गो एड. नहीं है आपके पॉकेट साइज में, डू नॉट, पीछे मत भागो, चेस मत करो प्राइस को. अच्छा डिमांड जोन देखो या अच्छा प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट जोन देखो, देन सपोर्ट पे आप लो ना. फिर सपोर्ट तोड़ने के बाद आपका स्टॉप लॉस छोटा ही रहता है ना, क्योंकि सपोर्ट तोड़ दिया, अडर कर लो भाई, सपोर्ट तोड़ दिया दे दो, चुपचाप आ जाओ बाहर, नेक्स्ट सपोर्ट पे जाके बाइंग करो. डिड यू गेट मी. सो 1,01,000 के जो सपोर्ट है वहां पे डिमांड जोन भी अच्छा है, राइट. बट मतलब इवन 1,09,000 पे भी आई कैन सी ऑन अ डेली चार्ट एक डिमांड जोन भी है. एक बार नहीं 2 बार वापस आके गया है,
and this is another buying line. मतलब यहाँ से आके भी वापस जा सकता है, यहाँ से तोड़ने के बाद यहाँ पे आके भी वापस जा सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, राइट. बट करंट ये लेवल पे तो आई पर्सनली वुड नॉट like to go ahead because I have a gap also over here, and still geopolitical situation is still not yet stabilized, right. टैरिफ को लेके जो चल रहा है, so वो अभी तक stabilize नहीं हुआ है. तो तब तक वैसे if you see one day or the one or the another news is always going to come, right. आज टैरिफ का है, कल यूक्रेन, मतलब few years back it was Ukraine Russia war, and few years back it was about Lehman Brothers, US recession, उसके पहले चाइना का. So this is all, मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ तो मिलने ही वाला है. तो डेली कुछ ना कुछ तो मोमेंटम है ही. इट इज जस्ट यू शुड नो at what level you should buy and at what level you should keep your targets and exit. That's all. So silver currently no buying situation, 1,16,000 पे आएगा तो scenarios देख के we can look out for a fresh buy. Obviously stop loss silver में stop loss, gold silver में stop loss लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, right. Until digitalize पकड़ रहे हो तो yes contracts रहेगा आपका, तो yes you have to either carry roll over करना पड़ेगा. contracts में हो तो, फिजिकल में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर. क्रूड नेगेटिव ही है, क्रूड भी देख लेते हैं ना. इधर तक आई है गोल्ड और सिल्वर लेके, तो क्रूड का फ्यूचर्स भी देख लेते हैं. क्रूड बहुत पहले आई गेव अप दिस मार्किंग, आई थिंक सो इट वाज ऑन अ वीकली. वीकली में ये मार्किंग था ही. ट्रेंड इज स्टिल डाउन, राइट. दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट. तो अभी तो फिलहाल, मतलब एट दैट टाइम आई थिंक सो इट वाज ओवर हियर. सो लॉन्ग करना या शॉर्ट करना वी डू नॉट नो. मिड वे में आप कुछ नहीं कर सकते हो. मिड वे यू कैन नॉट डू एनी ऑफ द ट्रेड्स, राइट. इधर ओवर हियर इफ यू गेट अ ग्रीन रेड कैंडल, शॉर्ट करो. इसके ऊपर ग्रीन आएगा तब आप तेजी की तरफ देखना, तब तक आप देखना ही मत तेजी की तरफ, राइट. क्रूड ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे डाउन, वापस यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन, वापस यहाँ से डाउन. मतलब आई थिंक सो दिस वाज इन 16th of June, राइट. वहाँ से वापस डाउन. अभी यहाँ पे क्रूड में यू कैन डू ओनली ऑप्शंस ट्रेडिंग, सो इट शुड बी वेरी, you should be very very careful while you are trading in crude. ये वीकली का चार्ट है, वीकली ट्रेंड डाउन है. 15 मिनट्स बहुत गैप्स मिलेंगे आपको. ये देखो, यू हैव अ गैप ओवर हियर, यू हैव अ गैप ओवर हियर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्रूड आप, इफ यू आर प्लानिंग फॉर एंट्री इनटू कमोडिटीज, आई वुड से भाई 6-7 मंथ्स ऑब्जर्व करो उसकी मोमेंटम्स कैसे है, उसके ऑप्शंस के मोमेंटम्स कैसे हैं, एट व्हाट न्यूज़ इट इज़ रिएक्टिंग. पॉजिटिव यूएस डॉलर ऊपर जाता है तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यूएस डॉलर नीचे जाता है तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग्स, देन यू हैव टू प्लान ट्रेडिंग इन कमोडिटीज, राइट. सो आई होप दिस इज अ वेरी लॉन्ग वीडियो. This is what is about crude. Natural gas I am not tracking. Natural gas भी वैसे ही, natural gas technicals देख लेता है, क्योंकि natural gas का this is natural gas का size, lot size is 1250 I think so. तो that's the reason, मतलब उसमें ₹1 का मोमेंटम भी आता है ना, तो 1250 का मोमेंटम आ जाता है. एंड इफ यू आर एट द रॉन्ग साइड दैन स्ट्राइट अवे 7-8 रुपीज़ का मोमेंटम आ गया तो फिर फंस गए, है क्या नहीं. सो इट इज़ बेटर क्रूड की नेचुरल गैस थोड़ा अवे ही रहेंगे तो अच्छा है. नेचुरल गैस वी आर गोइंग टू कम एट अ सपोर्ट, दैट इज अ गुड साइन. अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो यू हैव द नेक्स्ट सपोर्ट एट दिस लेवल्स.
एंड तो 2-3 रुपीज़ का मोमेंटम मिल जाएगा. 15 मिनट का है ये मैं बोल रहा हूँ. वीकली मंथली ऑब्वियसली उसमें भी ट्रेंड्स और ऐसा यू हैव टू चेक. Why see up now you must be able to understand why natural gas नहीं इतना पसंद है. 2023 से लेके 2025 मतलब 2 साल तक नेचुरल गैस का प्राइस है ना इधर ही रहा है. तो उसमें प्रीमियम्स ईटिंग ज़्यादा होता है. मोमेंटम आते हैं बट बहुत कम आते हैं कंपेयर टू द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वी आर हैविंग. ओके, so this is about commodities. I hope you will be enjoying this long video. So let us meet up on Monday evening. Till that time, keep analyzing the charts, keep reading about new companies, keep reading about, try to gain knowledge about other countries' views also. Fine. So have a great trading session on Monday. Take care. Thank you.